Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today the topic of my video is Ode to Autumn by John Keats. So let's start the video. Before starting the major introduction or the major explanation of the ode, I would like to give a little introduction about the poet. That is John Keats. So John Keats was an English romantic poet. He is also called as a poet of nature, one of the main figures of the second generation of the romantic poets. बेसिकली जो जॉन कीट्स की डेथ हुई थी दैट इज़ ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25. अगर हम बात करें कि कीट्स कब पैदा हुए थे, कहाँ पर पैदा हुए थे, सो ही वॉज बॉर्न इन लंडन ऑन 31st October 1795. He died at the age of 25. Keats had perhaps the most remarkable career of any English poet. इन्होंने सिर्फ 54 पोएम्स पब्लिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि तमाम इंग्लिश पोइट्स में सबसे ज़्यादा जो शोहरत हासिल हुई, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली, वो जॉन कीट्स को मिली थी. जब ये अलाइव थे, जब जिंदा थे, तब तो इनकी पोइट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्री होती थी. बट व्हेन ही वाज डेड तो इनकी पोइट्री को अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हो गई थी. सो हिज पोएम्स वर रिसीव्ड by critics during his lifetime. जैसा कि मैंने अभी बताया, his reputation grew after his death. By the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets, and he has very much influence on poets and writers. One of his friends says that my first encounter with Keats' work was the most significant literary experience of my life. So, इस कोटेशन से हमें ये ज़ाहिर होता है कि कीट्स की जो वर्क था लिटरेचर में उनकी क्या वैल्यू थी. सो आई एम कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एन ओड. दैट व्हाट इज एन ओड? सो an ode is a type of lyrical stanza. It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature intellectually as well as emotionally. So I think the definition of ode is self-explanatory. Actually, in an ode, there is a structure that in the beginning and in the middle, the speaker moves from real to ideal. And when it comes from middle to its end, the theme of the poem changes. So, Keats basically wrote 6 odes in 1819, and To Autumn is in the last section, and it was considered as the last poem or ode he wrote in his life. Coming towards the ode, that is To Autumn, let's have a look on the historical background of this ode. Actually, To Autumn is the final work in the group of poems known as Keats' 1819 odes. इन्होंने ये तब लिखी थी जब वो एक ऑटम की इवनिंग में विंचेस्टर में वॉक कर रहे थे. एंड द वर्क मार्क्स द एंड ऑफ हिज पोएटिक कैरेक्टर, एज आई डिस्क्राइब अर्लियर, कि ये उनके करियर की सबसे लास्ट पोम, ये सबसे लास्ट ओड थी. अ लिटिल ओवर अ ईयर after the publication of To Autumn, Keats died in Rome. So, ये जो poem है, ये जो Ode to Autumn है, it is divided into 3 paragraphs. We can say 3 stanzas. और इन तीनों stanzas में 11 lines हैं. The poem has 3 11-line stanzas which describes progression through the season. In the first stanza of 11 lines, there is a discussion of changings throughout the seasons. In the second stanza, there is a discussion maturation of the crops to the harvest. And in the third and last stanza, there is a discussion of the last days of autumn when the winter is nearing. So, when we talk about the structure of the poem, then it consists of iambic pentameter. Iambic pentameter basically एक ऐसी हम लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं जिसमें एक वर्स, पोएम की एक वर्स के अंदर 5 मीटर्स मिलते हैं, और उन 5 मीटर्स में हमारे पास वो 10 फुट्स होते हैं जिसमें एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है. इन दिस पोम, इमेजरी इज अचीव थ्रू पर्सोनिफिकेशन, कपलेट बिफोर लास्ट लाइन एंड 3 सिमेट्री. यस, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी 3 लाइन्स हैं, और वो तीनों की तीनों जो हैं 11 3 स्टैंसेस हैं, और वो तीनों स्टैंसेस जो हैं वो 11 लाइन्स पर हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ Ode to Autumn. In the next video, inshallah, we will start the complete line-to-line explanation of Ode to Autumn,
of first stanza. Thank you, and please do subscribe and like the video.